Hi guys, this is me Sapna. Welcome to Sapna. And in today's video, I post a video. Hi everyone, this is me Sapna. Welcome to my channel. Hi everyone, this is me Sapna. I'm from Kolkata. Welcome to my channel Creativity with Sapna. I post video related to art and craft and DIYs, but in today's videos I will be doing something different, and that is in today's video I will be doing makeup, and the makeup will be my everyday makeup look. राइट नाउ जो मैंने मेकअप किया है इट्स माई एवरीडे मेकअप लुक. मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इसी तरह का मेकअप करती हूँ. तो अगर आपको ये मेकअप अच्छा लगा तो इसका ट्यूटोरियल आगे ज़रूर देखिए एंड कीप वॉचिंग. ओके नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट मेकअप स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आपका फेस एकदम क्लीन हो एंड इवन मॉइस्चराइज हो. तो सबसे पहले मेकअप स्टार्ट करने के लिए आपको अपना प्राइमर यूज़ करना होगा. और आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे बहुत ज़रा सा ही थोड़ी सी ही क्वांटिटी में आपको प्राइमर लेने की ज़रूरत है, ज़्यादा ना लें. और अपने टी जोन पे ही कंसंट्रेट करें, इसे टी जोन पे ही लगाएं, स्पेशली अराउंड योर नोज़, फॉरहेड एंड अंडर योर चिन. एंड जो बचा कुचा है मैं इसको अपने नेक पे थोड़ा सा लगा लूँगी. प्राइमर इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट एक्ट एज अ बेस ऑफ मेकअप, सो इसे स्किप ना करें. नाउ इट्स टाइम टू यूज़ कंसीलर. कंसीलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप फाउंडेशन लगाना नहीं भी चाहो तो आप स्किप कर सकते हैं, बट डोंट स्किप दिस स्टेप. आप इसे देख सकते हैं कि मैं अपने अंडर आइज़ में लगा रही हूँ बिकॉज इट cover the dark circles and uneven color on your face, like around my mouth and even on the chin. You can use it on your forehead and on the highest edge of your nose to give its better structure. Now it's time to blend the concealer with the blender. Don't drag it or else your blender will take away the concealer. Now you can see most of the dark circle and uneven color on my face has been covered. Now I'm using my favorite Fit Me foundation. Now I'm using very less amount of foundation all over my face. मुझे ऐसे ही डॉट डॉट करके लगाना सही लगता है बिकॉज इससे आपका बहुत ही कम फाउंडेशन आपको फेस पे लगाना पड़ता है. I am using MAC concealer and contour stick 2-in-1. After putting foundation on your face, आपके सारे फेस के स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देते ठीक से, तो इसलिए कंटूर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. इससे आपके सारे जो स्ट्रक्चर छुप गए हैं फाउंडेशन लगाने के बाद ये फिर से इन्हेंस हो जाता है. सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. Now it's time to blend it properly. You will see your face has been enhanced. Now I'm using Sugar Pop compact face powder to lock my makeup and so that it lasts longer. I'm using very light color brown eyeshadow for my crease line so that it give a little bit of a puff look. मेक श्योर कि आप आई शेडो को बहुत अच्छे से ही ब्लेंड करें. नाउ आई एम यूजिंग वेरी लाइट ब्राउन, लाइटर समवट पीच फॉर माई अपर लिड. For my outer edge of my eyelid, I am using dark brown eyeshadow so that it look perfect and matte. आउटर एज में मैं लास्ट में थोड़ा सा ब्लैक आई शेडो यूज़ कर रही हूँ. नाउ इट्स टाइम टू पुट आईलाइनर. मैं बहुत ही थिन ही आईलाइनर लगाना प्रेफर करती हूँ बिकॉज आई हैव अ हुडेड आइज़ एंड हुडेड आइज़ उनके होते हैं जिनके आईलिड पे कम स्पेस होते हैं. सो आई प्रेफर यूजिंग वेरी थिन आईलाइनर वेरी क्लोज टू माई आईलिड.
Mascara is very important to give some weight to your eyes, and it's enhance your eyes look, so it's very important. And also before applying eyelashes, mascara is must. It's time to put some kajal. It's my favorite part. I never forget to put kajal because kajal is my favorite, and I don't apply kajal on waterline. Below the waterline I usually apply so that my eyes look bigger. Now I'm using my Glam white kajal for my waterline, so my eyes look bigger. These are the tricks so that your eye looks so big. If you love big eyes, so these are the tricks to make your eyes bigger. Now it's time to put eyelashes. Eyelashes मैं अपने हाथों से लगाना ही पसंद करती हूँ. I don't use any tool because it make me messy. Now you can see the huge differences now and then before putting eyelashes. Now I'm using Music Flower brows gel, and it is very deep brown in color. I don't use black gel because it makes more deeper, and I don't like deeper eyeshadow. It should look much natural. Now I'm using concealer to give defined shape to my eyebrows. Now it's time to use some highlighter. Highlighter is very important because it highlights your facial structure of your face, and apply this on your nose and the bones of your cheek and on the highest point of your forehead as well. Now I am using blush. Don't use too much all over your face, but on the chin and some part on the nose and even on the chin. Now only lipstick part is left. Before applying lipstick, it is very important to moisturize your lip. Use any lip balm that you have. Now I am using my Glam Lit lipstick. It is one of my favorite lipstick, and I got it free of cost. You can also get it free of cost by, I have the link given in the description box. You can buy it. You can see I have used my Glam Lit lipstick, and its price is nearly 400, and its packaging is very nice. You can see it, and I have used the shade Pie Hunt, and you can see the price on the screen. It's $3.95, and you can get it for free. Only you have to pay delivery charge for it. And so if you want to buy it, the link I have mentioned in the description box, you can check it. Almost my makeup is complete. Now it's time to fix your makeup. I'm using fixing spray to fix all my makeup and to make it last longer. So here it's my complete makeup look. Hope you guys love it. So guys, don't forget to like and subscribe my channel. बहुत ही मेहनत के साथ मैंने वीडियो बनाया है. It's my first makeup tutorial. So hope you guys you have liked it. And to get new update, please press the bell icon. And also do follow me on Instagram. I have mentioned my page on the screen. So please guys follow me on Instagram as well.